Bismillahirrahmanirrahim. Let me introduce myself. I am Memuna Suriho, lecturer zoology from Government Girls Degree College, Dadu. Today's topic is skeletal system. We will study about the skeletal system today. Uh, First of all, the key points are introduction, types, and functions of the skeletal system. We will study about these points today. The learning questions of the skeletal system are: what is a skeleton? How many types of a skeleton? What are the functions of a skeleton? Today I will teach you about all these factors or all these 3 points. First of all, introduction of the skeletal system, definition of a skeletal system. The skeleton is the body part that forms the supporting structure of an organism. It can also be seen as the bony framework of the body, which provides support, shape, and protection to the soft tissues and delicate organs in animals. A skeletal system is a framework of bone which provides support in locomotion, and it also provides a shape to the body. There are 3 types of skeleton. Number 1, hydrostatic skeleton. Number 2, exoskeleton. Number 3, endoskeleton. Let's start our first topic, that is hydrostatic skeleton. Let me tell you what is hydrostatic skeleton. Hydrostatic skeleton is a skeleton formed by a fluid-filled compartment within the body called the coelom. The organs of the coelom are supported by the aqueous fluid, which also resists external compression. This compartment is under hydrostatic pressure because of the fluid and supports the other organs of the organism. This type of skeletal system found in soft-bodied animals such as sea anemone, earthworms, cnidaria, and other invertebrates. Hydrostatic skeleton is a fluid type skeleton which is found in the most of the invertebrates like, see, this is an earthworm, this is an invertebrate, this is an invertebrate, its phylum is Annelida. Here you can see its locomotion and type of locomotion, how it moves, how it squeezes its body. This type of skeleton is called hydrostatic skeleton. See guys, see students, there are 2 types of muscle found in these type of animals, these invertebrates, longitudinal muscles and circular muscles. See, it squeezes its body and releases its body. In this way, it can move from one place to another place. You can see fluid inside the body of this earthworm. You can see these type of animals or organisms in especially in ladyfinger, in the gram plant and other vegetables. Let's come to the topic. Here I have shown the figure of earthworm. You can see 2 types of muscles there, longitudinal muscles and circular muscles. This is the coelom which is found in its body. This hydrostatic skeleton is most usually secreted from the coelom. Here are some other examples of hydrostatic skeleton. As I have told you that these type of skeleton found in most of invertebrates. There are 9 phylums of invertebrates. I have discussed about the Annelida. This is another phylum, that is Platyhelminthes. I have shown here Planaria. This also shows the same movement, same type of locomotion as I have shown you in the earthworm. This is the type of hydroskeletal skeleton which is found in these organisms. Another example is Hydra, which belongs to the phylum Coelenterata. Here you can see these are tentacles. These are tentacles, and there are the types of muscles found in the Hydra. This type of organisms can move
through different types of locomotion. Mostly we call it somersaulting. It can move its tentacles to here and there, and also uh, it moves its body by the fluid too. Here another example, that is nematodes. These type of organisms, these types of worms found mostly in the rice. You can see in rice. Chicken. You can see these type of organisms in the rice and other organisms. Now come to the functions of hydrostatic skeleton. Advantages of hydrostatic skeleton: provide effective support to the body. Hydrostatic skeleton are found in many invertebrates, consist of fluid-filled cavities surrounded by muscles, as I have shown you in the figure. There are many disadvantages of these type of hydrostatic skeletons because it limits the size of organism. Organisms cannot grow to be very large. They need to be aquatic, and also does not provide protection to the vulnerable part of the body. Organisms can not move very fast. Now let's come at the starting of my topic, so that I want to tell you the whole my lecture in my mother tongue, that is Sindhi language. Assalamu alaikum baba, मां आहियां मेमुना सुर्यो. अॼु जो मुंहिंजो टॉपिक आहे स्केलेटल सिस्टम. जीअं त मां तव्हांखे सॼो ॿुधायो हुयमि इंग्लिश में त स्केलेटल सिस्टम उहो सिस्टम आहे जेको असांजी बॉडी खे शेप प्रोवाइड कंदो, असांखे मूवमेंट में बि हेल्प कंदो ऐं असांजी बॉडीअ खे ख़ूबसूरत शेप ॾियणु, हलण में, इन्हनि में फिरण में हेल्प करणु जेको आहे उहो स्केलेटन जो कमु आहे. असांजो अॼु जो हिन में जेके लर्निंग क्वेश्चन्स ऐं स्केलेटल सिस्टम जो तव्हां पढ़ंदव उन्हनि में इहो आहे त स्केलेटल सिस्टम छा आहे, उनजा कहिड़ा टाइप्स आहिनि ऐं उनजा फंक्शन्स कहिड़ा आहिनि. पहिरें नंबर ते त स्केलेटल सिस्टम मां तव्हांखे ॿुधायो त हीअ हॾ ऐं पिंजरो आहे. असां ह्यूमन बॉडी में ॾिसी सघूं था त इज़ीली असांखे नज़र अचे थो. असां जेकॾहिं स्केलेटल सिस्टम ॿियनि में ॾिसूं ऑर्गेनिज़म्स में, जीअं असां वटि कोड आहे, सिप्पी आहे, उन्हनि जे अंदरि वरी हिकिड़ो ॿियो टाइप जो स्केलेटन आहे जंहिंखे असां एक्सोस्केलेटन चवंदा आहियूं. ह्यूमन बॉडी में मुंहिंजी बॉडी में जेको स्केलेटन आहे उनखे असां एंडोस्केलेटन चवंदा आहियूं, जंहिंजो हे मां हिते ॾेखारियो आहे. इन जे बारे में असां नेक्स्ट पंहिंजे लेक्चर में पढ़ंदासीं त एंडोस्केलेटन छा आहे या कहिड़े तरीक़े सां मूव थो करे, छो त ही वॾो फाइलम आहे, कॉर्डेट आहे, उन सां बिलोंग थो करे. इन जे करे असां फ़िलहाल अचूं था पंहिंजे टॉपिक ते, जेको आहे असांजो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन. टोटल असां स्केलेटन जा 3 टाइप्स आहिनि. पहिरें नंबर ते हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, जेको लोअर ऑर्गेनिज़म्स में कीड़नि मकोड़नि में मिलंदो आहे, कीड़नि में स्पेशली, इंसेक्ट्स में न. इंसेक्ट्स में एक्सोस्केलेटन हूंदो आहे. ॿिए नंबर ते एक्सोस्केलेटन आहे, जेको असांखे मिलंदो आहे उन्हनि ऑर्गेनिज़म्स में जिन जे अंदरि शेल मौजूदु आहे, जिन जे मथां को ख़ासि कवरिंग हुजे, उनखे एक्सोस्केलेटन चइबो आहे. एंडोस्केलेटन उहो हॾनि जो पिंजरो जेको बॉडीअ जे अंदरि मौजूदु आहे, जंहिंमें हॾा विज़िबल ज़ाहिर न थियनि. हाणे हींअर असांजो छो त जेको टॉपिक आहे मेन उहो आहे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन. हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन उहो स्केलेटन आहे जंहिंमें जेको फ्लूइड जे थ्रू वर्क कंदो आहे. उहे ऑर्गेनिज़म्स, नंढड़ा नंढड़ा जीव, जरासीम या नंढड़ा नंढड़ा वर्म्स, जिन जे अंदरि डियर स्टूडेंट्स, जिन जे अंदरि फ्लूइड हूंदो आहे, जेको फ्लूइड जे थ्रू बॉडी मूव कंदी आहे, त उनखे जीअं मां तव्हांखे हीअ सवेर वीडियो ॾेखारियो, हिन में ॾिसो, ही तव्हां हिते ॾिसी सघो था त हिन में कीअं मूवमेंट थिए थी. हिन जा मसल्स आहिनि, हे मसल्स जे थ्रू मूव थो करे. हिन जो बॉडी जो फ्लूइड हिकु जाइ ते गॾु थींदो, वरी इहो साॻियो ई फ्लूइड जेको आहे उहो वापसि पंहिंजी जाइ ते वेंदो आहे. इन क़िस्म जे स्केलेटन खे असां हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन चवंदा आहियूं. लफ़्ज़ हाइड्रो जो माना आहे अहिड़ो स्केलेटन जेको पाणी आठो हुजे, फ्लूइड वांगुरु हुजे, बॉडी में हिकु जाइ ते अचे, गॾु थिए ऐं उनखां पोइ पूरी बॉडी सुकिड़जी वञे, सुसी वञे, वरी उहा सॼी वापसि कॉन्ट्रैक्ट थी ऐं एक्सपेंड थिए, वधे, अॻिते वधे. इन मूवमेंट खे असां हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन चवंदा आहियूं. हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन घणो करे जेके भींडियुनि मां कीड़ा निकिरंदा आहिनि या फोटा असां खाऊं था उन्हनि मां जेके निकिरंदा आहिनि, उहे जेके कीड़ा आहिनि या जेके चांवरनि मां स्पेशली सिवियूं निकिरंदियूं आहिनि, इहे एग्ज़ाम्पल आहिनि हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो. उन खां पोइ हे ॿिया एग्ज़ाम्पल्स बि मां हिते रखिया आहिनि, जिन में तव्हां पढ़ंदव त हाइड्रा छा आहे, कहिड़े तरीक़े सां हुन में मूवमेंट थी थिए. ही जीअं चांवरनि जो थी वियो, जीत थी वियो, या उहे जीत जेके ॿारनि जे पेट मां कीड़ा निकिरंदा आहिनि, जानवरनि जे पेट मां स्टमक हिन मां इंटेस्टाइन मां निकिरनि था. ही उहे जेके बि जीत थी था वञनि या जेके बि कीड़ा आहिनि, जीत अलॻि शइ आहे, कीड़ा